ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರು? ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಸತ್ಯದೇವರು, ನಿತ್ಯ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಮಾರ್ಗವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ವಿಮೋಚಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ, ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಜೀವ ಕೊಡುವ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ಜಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವವರು, ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है. यीशु हमारा मुक्तिदाता है. यीशु हमारे उद्धार करता है. यीशु मसीह ही हमारा सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है. यीशु मसीह जीवित वचन है. यीशु मसीहा हमारे चरवाही है. यीशु मसीहा हमारे सभी पापों को क्षमा करता है और सभी बीमारियों को चंगा करता है. यीशु मसीहा जगत की ज्योति है. यीशु मसीहा पुनरुत्थान और जीवन है. मनुष्य तथा परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ भी एक ही है, वहाँ स्वयं एक मनुष्य है. यीशु हमारा मित्र है. यीशु हमारा सहायक है. यीशु हमारा सुरक्षित स्थान है. यीशु मसीहा जीवन की रोटी है और जीवन देने वाला जल है. Who is Jesus Christ? Jesus Christ is our friend. Jesus Christ is our helper. Jesus Christ is our refuge. One mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Jesus Christ is our good shepherd. Jesus Christ forgives all our sins and heals all our diseases. Jesus Christ is the light of the world. Jesus Christ is the resurrection and life. Jesus Christ, He is our true God and eternal life. Jesus Christ is the living Word. Jesus Christ is the way, the truth and the life. Jesus Christ is our Savior. యేసు క్రీస్తు ఎవరు? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు విమోచకుడై ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు జీవము వాక్యమై ఉన్నారు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు సత్యమై ఉన్న దేవుడు, నిత్య జీవము అయి ఉన్నారు. యేసుక్రీస్తు రక్షకుడై ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు సత్యము, జీవము, మార్గమై ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు మన స్నేహితుడు. యేసుక్రీస్తు మన ఆశ్రయదుర్గం. దేవునికి మనుషులకు మధ్యస్థుడు అవుతాడే ఆయన మానవుడైన యేసుక్రీస్తు. ఆయనే జీవగలటి, ఆయనే ಜೀವಜಲಮೈ ఉన్నాడు. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಆಮೇನ್. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.